On April 16, 2022, a teenager in Karachi stepped out of her home early in the morning to throw garbage in the public bin nearby. She never returned home that day. According to reports based on court and police proceedings, she was abducted by a young man and his companions from Lahore. A horrible experience awaited her. The saga of the unfortunate girl must be quite familiar to those who followed the case. For others, I can sum it up in a few lines. She was allegedly seized forcibly by a young man called Zahir, and taken to Lahore where a marriage was enacted, as claimed by the accused. Legal wrangling and police inaction slowed the case proceedings for over 3 months. During this period, she visited Karachi for a day on court orders. The Karachi police issued an interim challan leveling charges of abduction, rape and forced marriage against Zahir, and a disputed medical examination of the girl was conducted in Lahore to determine her age. Ultimately, the Sindh police managed to bring her back to Karachi, where she was admitted to a child protection center and assessed psychologically. Tests put her age somewhere around 15 to 16 years. Another 5 months of court proceedings finally led to her being handed over to her family in January after the magistrate ascertained her willingness to return home. The social media and the so-called YouTubers kept public interest in the case alive by sustaining a parallel conversation. Its positive outcome has been a growing awareness of the curse of trafficking, which is now recognized under international law as the recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons by means of a threat or use of force or fraud or deception for forms of exploitation. The level of trafficking in Pakistan is horrendous. Hopefully, people will also learn about the dignity of a child and the magnitude of the crime committed against children in Pakistan. The most victimized are the children of the poor, who do not have awareness and the kind of legal aid provided to the girl in question. If the case has sensitized society to the needs of the child, rich or poor, something more will have been achieved than the release of a teenager. For this, we have to thank the girl's father, who refused to accept an out-of-court settlement when it was offered, saying that he was acting for the many other trafficked girls in the country. The fact is that this girl's case is not unique, horrendous though it is. She was only one of the thousands. In 2021, the number was around 17,000, according to the Trafficking in Persons report issued by the U.S. Secretary of State in July 2022. Females to be picked up for unspecified exploitation in the Islamic Republic of Pakistan. What has drawn public attention is the role of her defense counsel, Jibrin Nasir, whose knowledge of the law, courage and resolve has made it so prominent. He is fighting the case pro bono, and if he finally succeeds in getting the alleged traffickers convicted, it would be a red-letter day for decency in Pakistan. A quick reading of the U.S. reports section on Pakistan is an eye-opener and gives an idea of the magnitude of the task Jibrin Nasir has taken on. The report places Pakistan in Tier 2 because it does not fully meet the minimum standards for the elimination of trafficking. The main criteria used to judge a government's performance are the number of investigations and prosecutions under the 2018 Prevention of Trafficking in Persons Act, PTPA, and convictions. Worse is the charge that victim identification remained inadequate, and for a third year, the government did not take adequate action against credible reports of official complicity in trafficking. There are reports of victims being re-victimized soon after rescue, and corruption continued to hinder anti-trafficking efforts. The number of victims is quite ambivalently quoted. The 2022 report, reporting year 2021, gives the total number of female trafficking victims, for sex and unspecified exploitation, as approximately 17,000, constituting an overwhelming majority of the total trafficked people, 21,253. Of this humongous number of cases, only 130 were investigated, 39 prosecuted, and no one was convicted. The pattern has remained unchanged year after year. Here, a mention should be made of the HRCP's excellent report titled Modern Slavery, Trafficking of Women and Girls in Pakistan, released in February 2022. It analyses the problem in a holistic context. This report describes trafficking as gendered business and confirms the double burden of women when it writes,
The trafficking of women and girls for sexual exploitation is one of the most prevalent forms of trafficking in Pakistan. A significant number of women taken as bonded labor in agriculture and microenterprises suffer sexual abuse. Published in Dawn, January 27, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. 16 अप्रैल 2022 कराची में एक नॉर्मल लड़की सुबह सवेरे अपने घर से बाहर निकलकर करीबी पब्लिक बन में कचरा फेंकने लगी। वो इस दिन कभी घर वापस नहीं आया। अदालती और पुलिस कार्रवाई पर मबनी रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे लाहौर से एक नौजवान और उसके साथियों ने अगवा किया था। एक खौफनाक तजुर्बा इसका इंतजार कर रहा था। बदकिस्मत लड़की की कहानी उन लोगों को अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए जिन्होंने इस केस की पैरवी की। दूसरों के लिए मैं इसे चंद सत्रों में खुलासा कर सकता हूँ। मुल्जिम के दावे के मुताबिक इसे ज़हीर नामी नौजवान ने मुबैना तौर पर ज़बरदस्ती पकड़ अलिफ और लाहौर ले गया जहाँ शादी हुई। कानूनी कशमकश और पुलिस की गैर फालियत ने 3 माह से ज़्यादा अरसे तक केस की कार्रवाई को सुस्त कर दिया। इस दौरान वो अदालती अहकामात पर एक दिन के लिए कराची आई। कराची पुलिस ने ज़हीर के खिलाफ अगवा, रेप और जबरी शादी के इल्ज़ामात आयद करते हुए अबूरी चालान जारी किया और लड़की की उम्र का तयन करने के लिए लाहौर में इसका मुतनाज़ा तिब्बी मुआयना किया गया। आखिरकार सिंध पुलिस इसे वापस कराची लाने में कामयाब हो गई, जहां उसे चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में दाखिल कराया गया और नफ्सियाती तौर पर इसका जायजा लिया गया। टेस्ट में इसकी उम्र 15 से 16 साल के दरमियान बताई गई। मजीद 5 माह की अदालती कार्रवाई के नतीजे में आखिरकार जनवरी में मजिस्ट्रेट की जानिब से घर वापस आने की ख्वाहिश का पता लगाने के बाद इसे इसके अहल खाना के हवाले कर दिया गया। सोशल मीडिया और नाम निहाद यूट्यूबर्स ने मुतवाज़ी गुफ्तगू को बरकरार रखते हुए इस मामले में अवामी दिलचस्पी को जिंदा रखा। इसका मुस्बत नतीजा स्मगलिंग की लानत के बारे में बढ़ती हुई आगही है, जिसे अब बैन अल-अक़वामी कानून के तहत धमकी या ताकत के इस्तेमाल के जरिए अफराद की भर्ती, नकलो हमल, मुंतकिली, पनाह वसूली के तौर पर तस्लीम किया गया है। इस्तेहसाल की शक्लों के लिए धोखादही या धोखादही। पाकिस्तान में स्मगलिंग की सतह खौफनाक है। उम्मीद है कि लोग बच्चों के वकार और पाकिस्तान में बच्चों के खिलाफ होने वाले जराइम की शिद्दत के बारे में भी जानेंगे। सबसे ज्यादा मुतासिर गरीब ओहे के बच्चे होते हैं जिनके पास आगाही नहीं होती और जिस तरह की कानूनी मदद लड़की को फराहम की जाती है। अगर इस मामले ने मुआशरे को अमीर या गरीब बच्चे की ज़रूरियात के बारे में हसास बना दिया है तो एक नौउम्र की रिहाई से कहीं ज्यादा कुछ हासिल किया जा सकता था। इसके लिए हमें लड़की के वालिद का शुक्रिया अदा करना होगा जिन्होंने अदालत से बाहर तस्फिये की पेशकश करते हुए इसे कबूल करने से इनकार करते हुए कहा कि वो मुल्क में स्मगल की जाने वाली कई दीगर लड़कियों के लिए काम कर रहे हैं। हकीकत यह है कि इस लड़की का मामला अनोखा नहीं है, खौफनाक है, अगरचे ये है। वो इन हजारों ख्वातीन में से एक थी। जुलाई 2022 में अमरीकी वजीर खारजा की तरफ से जारी करदा स्मगलिंग इन पर्सन्स रिपोर्ट के मुताबिक यह तादाद तकरीबन 17,000 थी जिन्हें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में गैर वाज़े इस्तेहसाल के लिए उठाया गया था। जिस चीज़ ने अवाम की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराई है वो उनके दिफा के वकील जिब्रान नासिर का किरदार है, जिनके कानून के इल्म, जुरत और अज़्म ने इसे इतना नुमाया बना दिया है। वो ये मुकदमा लड़ रहे हैं और अगर वो बिलाखिर मुबैना स्मगलरों को सजा दिलवाने में कामयाब हो जाते हैं तो ये पाकिस्तान में शाइस्तगी के लिए सुर्ख हरूफ का दिन होगा। पाकिस्तान के बारे में अमरीकी रिपोर्ट के सेक्शन का फौरी मुताला आंखें खोल देने वाला है और इससे अंदाजा होता है कि जिब्रान नासिर ने कितना काम किया है। रिपोर्ट में पाकिस्तान को टॉप 2 में रखा गया है क्योंकि यह स्मगलिंग के खात्मे के लिए कम अज कम मेयारात पर मुकम्मल तौर पर पूरा नहीं उतरता। हुकूमत की कारकर्दगी का फैसला करने के लिए इस्तेमाल होने वाले बुनियादी मेयार 2018 के इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के एक्ट (PTPA) के तहत तहकीकात और इस्तिगासा की तादाद और सजाओं की तादाद है। इससे भी बदतर ये इल्जाम है कि मुतासरीन की शनाख्त नाकाफी रही
और तीसरे साल तक हुकूमत ने स्मगलिंग में सरकारी तौर पर मुलव्वस होने की काबिल एतमाद इत्तलात के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई नहीं की। ऐसी इत्तलात हैं कि रेस्क्यू के फौरन बाद मुतासरीन को दोबारा निशाना बनाया जा रहा है और बदउनवानी की वजह से इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम की कोशिशों में रुकावटें पैदा हो रही हैं। मुतासरीन की तादाद काफ़ी मुतज़ाद तौर पर बयान की गई है। 2022 की रिपोर्टिंग साल 2021 में ख़वातीन की स्मगलिंग का शिकार होने वाली ख़वातीन की मजमूई तादाद जिनसी और गैर वाज़ेह इस्तेहसाल के लिए तकरीबन 17,000 बताई गई है, जो कल स्मगल शुदा अफराद 21,253 की भारी अक्सरियत है। इनमें से सिर्फ 130 मामलों की तफ्तीश की गई, 39 पर मुकदमा चलाया गया और किसी को सजा नहीं दी गई। साल ब साल पैटर्न में कोई तब्दीली नहीं आई है। यहाँ HRCP की फरवरी 2022 में जारी होने वाली बेहतरीन रिपोर्ट की जदीद गुलामी पाकिस्तान में ख़वातीन और लड़कियों की स्मगलिंग का जिक्र करना ज़रूरी है। ये एक जामे सियाक व सबाक में मसले का तज्जिया करता है। इस रिपोर्ट में इंसानी स्मगलिंग को सिनफी कारोबार के तौर पर बयान किया गया है और ख़वातीन पर दोहरे बोझ की तस्दीक करते हुए लिखा गया है कि जिनसी इस्तेहसाल के लिए ख़वातीन और लड़कियों की स्मगलिंग पाकिस्तान में स्मगलिंग की सबसे आम शक्लों में से एक है। ज़राअत और माइक्रो इंटरप्राइजेज में बंधवा मजदूर के तौर पर ली जाने वाली ख़वातीन की एक बड़ी तादाद जिनसी इस्तेहसाल का शिकार होती है। अखज़ शुदा बतारीख 27 जनवरी 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.